Assalamu alaikum. Dear students, welcome. Dear students, आप कैसे हैं? I hope आप सब खैर खैरियत से होंगे. Students, today our class is 10th, unit number 1, and topic is Hazrat Muhammad, peace be upon him, and embodiment of justice. ठीक है? And today we are going to study paragraph number 2. Paragraph number 2. Let's start our lesson, part 1, reading of the paragraph number 2. Hazrat Muhammad, peace be upon him, practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasool of Allah Almighty. As a young trader, he, peace be upon him, earned the good reputation of being an honest, fair, and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the most equitable plan for the setting of black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, रीडिंग ऑफ द पैराग्राफ, and it was paragraph number 2 from the unit 1, class 10th. Next, second part of our lesson is difficult words and their meanings. Okay, dear student, difficult words में से first word practically, अमली तौर पर, इक्विटेबल, गैर जानिबदार या मुनसिफाना, रेपुटेशन, मकाम या शोहरत, रुतबा, कंस्ट्रक्टेड, तामीर किया, अरोज, शुरू हो गया या उठ खड़ा हुआ, डिस्प्यूट, झगड़ा, तनाज़ा, रिगार्डिंग के लिहाज से, ब्लैक स्टोन, हजरे अस्वद, प्लीज्ड, खुश हुए, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, कबायली झगड़ा. Dear students, write all these difficult words with their meanings on your notebook and learn them by heart. So our last part of the lesson is translation. Paragraph number 2, keep in mind. Sentence number 1. Hazrat Muhammad, peace be upon him, practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasool of Allah Almighty. Hazrat मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुनसिफ और गैर जानिबदार कोई नहीं हो सकता. As a young trader, he, peace be upon him, earned the good reputation of being an honest, fair, and just businessman. बहैसियत नौजवान ताजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदार, साफ शिफाफ और मुनसिफ कारोबारी शख्स के अच्छा मकाम पाया. He always had fair and just dealings with all people. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तमाम लोगों के साथ साफ शिफार और मुनसिफाना लेन देन फरमाया. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone.
जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो लोगों के दरमियान हजर अस्वद के सिलसिले में झगड़ा शुरू हो गया। He advised the most equitable plan for the setting of black stone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को नस्ब करने की मुनसिफाना तजवीज़ पेश की। This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. इससे सब खुश हो गए और वो कबायली झगड़े से बच गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर या यूनिट नंबर 1 क्लास 10th, ठीक है, और इसका ये पैराग्राफ नंबर हमारा 2 था आज का। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसे बार बार देखना है। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।